ऐसा क्या है जिस तरह से आप अपने डिजीज से बाहर निकल सकते? Give me a quick thumbs up, and if I have your permission, I would like to share the screen. So I got a thumbs up from Antara ma'am, and there lots of people are willing to know, and I hope people are willing to work on their body and are willing to know more about Ashtang Chikitsa. Just give me 2 minutes. I will share the screen. Is the screen visible? Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. Namaskar, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from but have not yet found any permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He's taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say the structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness, a profound way of addressing the aspects of a human body. So, who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will talk about the Ashta Sharir or the 8 softwares in the body. Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. So when we talk about the neuromuscular health issues, we talk about the Prakriti and the Vikriti Sharir. So Prakriti yani ki natural regenerative factor of the body. Vikriti yani ki degenerative factors of the body. तो होता क्या है जब आपके imbalances आते हैं between the regenerative and the degenerative factors, what surfaces is the pain, inflammation, and the stiffness. So Ashtang Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on, but these are common problems which we see among the participants. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation,
neuropathy, or the nerve issue. So Ashtanga Chikitsa can obviously heal much more than that. These are some of the more chronic problems: muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease, dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly he has to say about Ashtanga Chikitsa. Thank you for listening to me patiently. I was just giving you a brief of Ashtanga Chikitsa. So let me just brief you about how we will proceed in the webinar. इसके बाद आप सुनेंगे recorded video of Swami Raj Vibhuji, and then we will have somebody live who would be joining us to share his or her experience of Ashtanga Chikitsa. After that, we will be sharing the program details. And last but not the least, we will be having Swami Raj Vibhuji live to answer all your questions. So किस बात के लिए रुके हुए हैं? चैट में तुरंत लिख डालिए आपके problems along with your name and number so that I myself can read out the questions at the fag end of the webinar. Thank you so much. Over to Anilji to share the video. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose is the most common problem at this point of time. सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था. रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. And he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे?
शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका reason ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है? यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द का रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा. Lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang Chikitsa. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और Ayurved kalachar, in yoga kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works,
ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं, यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर। तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे। सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट? इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट? नो, इट इज नॉट डिफरेंट, ये अलग नहीं। सो योर बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव्स टू लिव। ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के, हाँ या ना? सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्मेशन। नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं। एंड देर इज अनदर एस्पेक्ट कॉल्ड विकृति, लॉट ऑफ सेल्स which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन एज, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है। There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका। So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं। If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो। योर बॉडी डजंट वांट टू। अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है। You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी। I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया। Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी। What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है। Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है। Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं। So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration
and degeneration. And there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है. You feel damage, ना? You think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को. ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. Nabhi, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale.
Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of Cowdy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू, ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो. सांस रोकी आपने. इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, व्हाट इज द बेसिक की? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? इट इज कुंभक, इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you, that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार. डेंसिटी, इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the density becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver?
No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन, देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, तो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे हैं, तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions.
ऐसी जगह है जहां पे कि मूवमेंट होती है. देयर आर जंक्शंस, मसल एंड नर्व जंक्शन, मसल एंड बोन जंक्शन, टू बोन्स एंड देयर इज अ जंक्शन. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्मा. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली मेक them मूव इन अ पर्टिकुलर वे कॉन्स्टेंटली. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल. इफ योर मर्मस आर नॉट फंक्शनिंग, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी मूवमेंट इन योर बॉडी. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ सर्कुलेशन. ऐसे मान के चलिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, देयर आर टिश्यूज एंड सेल्स. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना वेस्ट छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma, अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement?
अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it will temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the
second last part or the seventh Sharira, it is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no?
This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment from through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose. In Prana Shakti diagnosis, यही Prana Shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti, and it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई ये magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for
listening to Swamiji patiently, I think the participants have got a fair insight about Ashtang Chikitsa and how the body works. Now, to get a deeper insight about the course, I would like to invite Lancelot Sir to please share his journey of Ashtang Chikitsa. So I'll just put Lancelot Sir, Pinto Lancelot Sir. I put you on spotlight. Thank you so much, sir, for joining us tonight. Sir, can you please unmute yourself? My name is Lancelot Pinto. Am I audible? Yes, sir, you're audible. I joined this Chikitsa because of my diabetics and back pain problem. So, and I had high cholesterol also. So after taking before my HDL, usually it was below 30 or 35 at the maximum. After consumption of ghee early in the morning, I went for checking after about a month, and I was surprised to see my HDL is above 40. So this is totally because of the consumption of ghee in the morning. And regarding my back pain, I had taken MRI last year, and according to the suggestion of one famous spine surgeon in Mangalore. So after seeing that, he told me operation is must for this case. Otherwise, he will not get cured. So luckily, I came across this therapy, Kumbhak therapy, and I started practicing. After practice, just like that, I just wanted to check the improvement. So I went to the same spine surgeon. He again prescribed me a MRI. And I went to the MRI and again gone back to the surgeon and shown him. So this time while seeing, he was surprised, it seems. He told me operation is not necessary, at least for now. I will give you some medication and we will see afterwards. Now I'm taking, of course, some medication, but it is not a painkiller. It is just a nerve supplement, nerve supplement, a food supplement it is. So in that only I am now managing well, and my pain is reduced. And moreover, I would like to thank the mentor, special mentor for my sake. She is Nina ma'am. She is taking all the efforts and teaching the yoga kriya, this Kumbhak kriyas, just like a kindergarten teacher teaches to the kid. She has got so much patience, and all the members were good. And therapy is not hard at all. It can be done by everybody. So this is my testimonial. I am happy with this therapy. Thank you so much, Lancelot, sir, for your testimony. Now, I would like to invite Vinayak Raghunath, sir, for his testimony. Vinayak, sir, am I audible? Vinayak, sir, if you can switch on your camera, please, and unmute yourself so that the participants can hear you and see you as well. Can you see me now? Sir, we cannot see you, but you're unmuted. We can hear you. What happened? Now? Yes, sir, we can see you now. Okay. Thank you so much for Good- joining us. Okay. Good evening, everybody. Those who are evening. listening to this webinar, I would like to share my experience regarding this Kumbhak therapy. I'm a retired army from Subedar rank, and I retired on 2006. After that, I was the instructor in Saini school for 11 years.
And now I am enjoying my retirement life. But suddenly in middle, I got a pain in my backbone due to I was sitting on a plastic chair, and suddenly the leg broke, and I fallen on my left hip. Due to that, a little sciatica pain has been started. So I have gone under treatment by the doctors. But after doing twice MRI and eating all these medicines, there was no relief. I came across when I was seeing the Facebook of this webinar, and I attended this webinar of Ashtang Chikitsa, and I joined the Kumbhak therapy. Within 1 or 2 weeks, where I could not sit in the asana also, after 2 weeks, I was able to sit easily in this position, asana position. And after that, I started doing all the kriyas very seriously. And thanks to Nina madam also, who the mentors who are teaching us, and she teaches very well during the practice, the correct position, how to take the breath, how to release the breath, how to hold the breath. All these things are important in kriyas, and when you do as per the advice, it definitely you will get this benefit from this kriya. Now I am able to walk easily in the morning. I could not walk in the morning when I get up from bed. I have to catch the walls to go to washroom also. Now I am easily walking without any taking any support. And I have agricultural land, and I go to my agricultural land the whole day. I walk there also, do a little small works also in the gardening, just like removing grass and this in of the plants. So I'm working also now. So this Kumbhak therapy has reduced my sciatica pain, my back pain, and all my body has come in such a what you call this balanced due to this Kumbhak. And I could not sleep also. There was a sleeping problem. I have only 2 or 3 hours I could sleep. After that, I could not sleep. Now I am sleeping for 6 hours, 6 to 7 hours. I could soundful sleep. So this is the benefit of this Kumbhak. And whoever are suffering from small problems of the health problem, you do this Kumbhak, and I'm definitely telling you this will help you. That is my experience. Thank you so much, Vinayak sir, for sharing thank you. your journey of Ashtang Chikitsa. Now, I would like to request Anil ji to please share the program details with the participants. They are eagerly waiting to know the online program details of Ashtang Chikitsa. Thank you, Ashnaji. Just give me a few seconds. I'll share my screen. Okay. Are you able to see my screen? Please give me a thumbs up if Yes. you can see the screen. All right. Okay. So without wasting much time, let's get to know the details, because soon after this, at about 7:40, Swamiji. This is a guided program which is conducted. Anil ji, we are not able to hear you. Can you hear me now? Yes. Okay. So first of all, this is a guided program which is conducted online on the Zoom app, just like you are attending this webinar right now on Zoom. So the classes are conducted online, and these are trained Kumbhak mentors who have been trained by Swamiji to take your classes and conduct the classes and guide you in the class. Like in the video also, Swamiji told that there are 3 modules in the program. Module 1, 2, and 3, or we can call them Vata, Pitta, and Kapha module.
Duration of each module is 21 days or 3 weeks. So total duration of the program becomes 9 weeks. Many people ask us that which modules they have to join. This is not an optional thing. Every module has to be completed because the Vata, Pitta and Kapha of the body needs to be balanced. That's why all the modules have to be completed. It's not an option to join any one. Okay, so just to making it clear so that you don't get confused later on. Program overview. If you see here, I've written 9 plus 1 week. Why 1 week extra? You'll get to know in a short while. There'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning or the main class and one will be the mentoring or the practice class. हफ्ते में 2 क्लास रहेंगी, एक मेन क्लास और एक प्रैक्टिस क्लास. तो टोटल 9 into 2, 18 classes. नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? आप प्रोग्राम फी पे करते हैं और एक स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग है उन लोगों के लिए जो अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं. दिस इज स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग. सो फर्स्ट स्टेप इज टू पे द प्रोग्राम फी, देन यू fill the participant onboarding form, and then you start your classes starting with module 1 or the Vath module. Total classes, 6 classes in every module. So since there are 3 modules, so 6 into 3, 18. But you may be seeing on the screen that there's one customization class also added to it. What is this customization? What is it about? We'll get to know very soon. So total engagement is of 10 weeks. Batch 138 is starting on 10th July, which is a Monday at 7 p.m. 138वां जो बैच है वो शुरू हो रहा है 10 जुलाई को, सोमवार के दिन शाम को 7 बजे. मेंटर क्लासेस रहेंगी थर्सडेज को मॉड्यूल 1 के लिए, फ्राइडेज को रहेंगी मॉड्यूल 2 में, और मॉड्यूल 3 के लिए मेंटर क्लासेस सैटरडेज को रहेंगी. We'll share all these details on WhatsApp as well as in chat here also, so you need not worry. What is the class experience like? As you must have understood by now, these are live sessions. ये live sessions रहेंगे, and mentors watch all the participants, so that's the reason you have to keep your cameras on. Mentors आपको देख पाए क्लास के अंदर, तो आपको अपना कैमरा ऑन रखना होता है. There'll be written instructions in English and Hindi. हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिखित निर्देश भी मिलते हैं, और सेशन रिकॉर्डिंग और क्लास रिकॉर्डिंग भी मिलती है. ऑल द क्लासेस आर रिकॉर्डेड एंड मेड अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. आगे बढ़ते हैं. There will be a lot of extra things that you'll be getting during the course of your program, like mental practices. You'll get a diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. There's no diet plan as such in this, because diet plans normally do not work. We'll talk about that later on and during the course also. You'll get a video from Swamiji in which he talks about how to use food so that it supports your body and not harm it. Okay. And then there'll be simple detox processes, and a lot of knowledge will be shared during the course of the 10 weeks that you'll be with us. I've written some numbers here in the form of yearly expenses that a lot of you may be doing just to manage the problem that you're into. And I'll explain why I'm sharing these with you. If you take into account the doctor's fee, these are yearly figures. हर साल शायद इतना खर्चा आप कर रहे होंगे. Doctor fee, you could be spending about 6,000 to 12,000 every year in the form of doctor's fee and consultancy. If you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000. You could be investing into this, and medicines may be costing another 15,000 to 30,000. These are rough estimates. So between 33,000 to 72,000, you may already be spending on the problem that you're into, just to manage it, not cure it. And if you talk about the side effects of allopathy treatments, we all know about it. So we will not talk about that here so much. Why I'm sharing these figures is because we do not take into account when we opt for a alternative treatment. We need, I mean, as human beings, we like to compare things. So if you want to compare, and when announce the fee very soon, you realize how economical this is without any side effects.
It's the most natural way of treating because you're not putting anything from outside. No supplements, no medicine, nothing. तो आगे बढ़ते हैं. Let's see. And it's also very important to know who this program is not for, so that it becomes very clear who this program is for. ये भी जानना जरूरी है कि ये program किन लोगों के लिए नहीं है, ताकि ये clear हो सके किन लोगों के लिए है. Right? This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. स्वामी जी इसकी बात करते हैं मैजिक पिल की, because there's no magic pill, वो बन नहीं सकती है. But we are used to, since childhood, we are used to popping a pill, taking a medicine. Most of the time it's allopathy. And it's become a habit now. Like if you see around in your family also, if there are small kids in the family, as soon as they get a cough or cold, you get scared and you just rush to the doctor and they'll give some syrups or some medicine. So that's become a habit. And with us also, it's been happening since childhood. So if you're expecting any kind of a magic pill, Amresh ji, please do not scribble on the screen. I'll just delete what you've written. Please do not do it because it's distracting. Okay. And it's not for who want results tomorrow only or very fast, because this problem that you have into, any health issue that you're into, did not come overnight, so they will not go overnight also. That we have to understand, right? And this is not for those who are ready to not work on their body, because it will require you at about 80 to 90 minutes every day to do your daily kriyas. If you don't have this kind of a time, because many people I talk to, they say that we don't have so much time, so give us something which will cure us very fast. So just wanted to make it very clear upfront that you need to invest time to do the kriyas. And this is not for those who are impatient. We understand when you're into pain, when you are into a chronic ailment, the patience goes down. But still, we wanted to tell you from our side, please be patient. And it's not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'd just like to elaborate on this point a bit in detail, because a lot of people have a misunderstanding that the treatment is free. Because on Facebook, we advertise that this webinar, it's an introduction to Ashtanga Chikitsa. This is free, but they misunderstand that the treatment will be free. So that's it. That's why it's important to emphasize here. The treatment is of 9 weeks. It's done under supervision. The mentors will be putting a lot of effort into the therapy along with you. So we cannot offer this for free. And if you're looking for some tips, and if you're joining a lot of webinars, which a lot of people do, they join each and every webinar they come across in the hope of picking up a tip. But if that were the case, you can get a lot of, thousands of videos in the form of tips on YouTube. Anybody knowing something can become an expert on YouTube, because there's no qualification there. You don't need to, you just post a video and become an expert and just give some tips. But for the information of everybody, a health issue, a chronic ailment cannot be treated with just some tips. Like if you remember in the webinar, Swamiji talks about that if you have a chronic ailment, if there's a pain, let's say knee pain hai, and if you think it's a localized problem, Swamiji bolte hai na ki don't think of the problem as a localized problem. Uska jad kahan hai, uska root cause kya hai, that needs to be. If you think it's a local problem and you treat it, the knee, you do something with the knee, massage or anything else. So, but the root is somewhere else. So tips जो है इससे नहीं होता, इसकी जड़ पता लगाना जरूरी होता है, जो इस प्रोग्राम में स्वामी जी करते हैं. Now, that was about who this program is not for. Now, when you enroll in the program, what all you get? First point is Pran Shakti diagnosis for root cause determination. If you put a value, if you put a monetary value on this alone could be worth the whole cost of this program. A lot of people who've attended our webinar, they've told us this,
that just the fee, total fee that we paid is worth this Pran Shakti diagnosis, because most of the treatments in the market, they are not able to find the root cause. And Swamiji's way of understanding about the body is completely different and completely opposite most of the time to what allopathy has been teaching us, telling us. Body does not function what allopathy thinks. That's why you got so many doctors. Heart का अलग है, kidney का अलग है. Body तो एक साथ काम करते हैं, organs एक साथ काम करते हैं. So allopathy, most of the time, it does not understand how the body functions. So Pran Shakti diagnosis is used to find the root cause. Now I'll explain a bit more how exactly this is done. First of all, this is online diagnosis and this is a non-medical diagnosis. Now both the things will sound very strange to you because we've been used to giving a sample of urine or blood or getting an MRI or X-ray or not whatnot. But this is none of that. If you remember in the video, Swamiji talked about the 84 forces that through which the body or the organs are functioning every day. So he can find out which force out of these 84 forces have become weak, and due to which you got into your current health issues. इसलिए होता कैसा? How is this done? You'll get a link to a form and you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotion. Okay, and you have to note those down in the form. Second thing that you'll be required to do is to write about your health issues in detail. And third thing that you'll be doing is you'll be uploading a selfie photograph in which the face should be clearly visible, but there has to be no specs on the eyes. आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए, और लेडीज के केस में नो मेकअप ऑल्सो. तो ये जब तीन चीजें स्वामी जी के पास पहुंचती हैं तो वो इस रूट कॉज पता कर पाते हैं, जो जड़ है, प्रॉब्लम की जड़ है, उसको पता कर पाते हैं. सो दैट्स हाउ दिस डायग्नोसिस इज डन. आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी. देन point 2 is weekly one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90 minutes? 60 minutes is the actual duration. Then we take up questions and clarify doubts and guide you in the class itself. So that's why another 20 to 30 minutes. So it becomes 90 minutes. Same is for practice class, 60 to 90 minutes. Then online course access for 6 months. What is this online course access? These are the recordings of the classes. Like I told you that all the classes are recorded and uploaded to your course dashboard, where you can access them for 6 months, which is enough time to learn all the kriyas by heart. So that's why it's 6 months. Then videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? Class recording is of the whole duration of 90 minutes. These videos are of separate kriyas. Some kriya may take 2 minutes to watch, some may take 10, 15 minutes. So you don't have to watch the whole class, whole 90 minutes of a class just to see how a particular kriya is done. You just watch that specific video and understand. Written instructions in English and Hindi. Hindi, English, दोनों में written instructions मिलती हैं. These instructions you can download and even take a printout. Many people like to follow instructions which are written. They don't want to go through the video. So whatever is your style of learning, it is available to you. Then private WhatsApp group to ask doubts, questions 6 days a week. Sundays the mentors are on a weekly off. So 6 days of the week, you can post your doubts, your questions regarding the kriyas, regarding the program, regarding the health issues in the private WhatsApp group. As soon as you enroll in the program, you'll be added to this class WhatsApp. This is the place where your doubts will be cleared, your questions will be answered. Like I told you, there'll be 2 live classes, the remaining 5 days of the week when you're practicing on your own, and if you have any doubt that time. So this is the place where you will be asking your doubts and questions. Our mentors are there in the group, so they'll be answering. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. अब आ रही है? Yes sir, yes. Okay, then individual participant progress tracking and feedback. This is done on a weekly basis.
so that we understand if you're making progress, and if not, why not? We try to find out the reason and then guide you accordingly. Therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. Please pay special attention to this. Since a lot of people will be having a lot of different issues, so the kriyas will be common in the 9 weeks. And I'll explain why 9 weeks are required. In the 10th week, based on the Pran Shakti diagnosis, if you remember the first point I talked about just now, based on your Pran Shakti diagnosis, the therapy will be fine-tuned and customized as per that diagnosis, and that will be different for everyone. Now, what happens in these 9 weeks, I'll just explain. There are a lot of things that will be happening, but primarily you can understand by 3 main points. The first, Vata, Pitta and Kapha of the body is balanced through Kumbha. Second, Swamiji talked about it in the video also. There are 3 basic alignments of the body: the inner thigh, navel, and the chest. Many problems occur due to a misalignment in the structure of the human body. The neuromusculoskeletal system, it is not aligned. So some problems may be occurring due to that. So in these 9 weeks, the second thing that will be done is the alignment of the inner thighs, navel, and chest. And third thing that will be done is you will be taught controlled exhalation, because this therapy is based on controlled exhalation. And this is the reason, if you are doing Kapalbhati on a daily basis, you are advised not to do it for the next 5 to 6 months, because in Kapalbhati, it is forced exhalation. And here we are trying to teach you is controlled exhalation, right? So these important things. So body is now prepared to receive this customization that I'm talking about, this 9th point. Just like you prepare the field before you sow the seeds, the same way the body is first prepared to receive this customized kriyas, which will be different for different people. Like let's say there are 10 people with knee pain, for example. So the reason of the knee pain can be different. That's the beauty of this therapy. 10th and the last point is extra free support for 30 days after the program is over. Like you'll be with us for 10 weeks, I told you. Another 30 days, you get live support. And this is done because many participants missed a few classes. Maybe they get too sick or due to some function or whatever reason. So you still get 30 days extra after the 10 weeks are over. Why this is done is because we understand this is an online program, and there are things which are at times difficult or challenging. So just to keep you supported, to keep every participant supported and guided in the right direction to come after their issues, we extend this support for 30 days after the program, right? Okay. Now, program fee for Ashtang Chikitsa, this is the part most of the people wait for. After that, they take a decision. 14,500 is a normal fee. But like I promised you, there's a special webinar pricing for people who are attending it live. What is that? Let us understand. Let us see. 6,500 only. And this is for the complete 9 weeks of our program plus 10 week. The 10th week, you get the customized practices, the 18 classes plus 1 extra class, the support in the group, the 6 months of access, everything I just talked about. It's being made so affordable that most of the people will be able to enroll in the program. How to enroll? First step is to pay the program fee. Then step 2 is to post the payment receipt in the WhatsApp group. Then you fill the participant onboarding form that Neha from our team will be sending you. And step 4 is to join the class WhatsApp group, the class WhatsApp which I talked about, where you get daily support. And step 5 is to start attending classes to learn Ashtang Chikitsa, a simple 5-step process. Payment methods we'll share in the group and in the chat also just now. And this is the last slide that I'll be taking up. I'll just stop here for a while and talk about the super team that we have, which will be at your service. And this is, we don't call ourselves the super team. Our participants have given us this label. Because when you enroll in the program,
you'll get to the, let you'll get to experience the team, how we support our team. Like testimony was given by Lancelot sir and Vinayak sir about they mentioned about the mentor. We have Rachna Shirmal Bothra. She's the program director and she's the host of this webinar. Shalini Bhagwat, she's the class manager. She takes care of all the batches. If you need to shift your batch or some mentor needs to be aligned, so she's taking care of all that. Ashwini Kumar, he's the IT manager. And then we have Neha Upadhyay, she's the enrollment in charge. Before starting your classes, before enrolling, you will be talking to her the most. She'll be sending you the payment details, answering your questions and everything. Then we have mentors, Aranjana, Radi Gupta, Soni Chabria, Aruna, Neena Rai, Meera, Sushma, Manvi Shroff. We have a lot of mentors because we need to support our program participants individually also sometimes. So we have enough mentors to take care of that. WhatsApp admin, that's me, Anil Chauhan. I'll be answering your questions if not answered here because due to shortage of time, Swamiji may not be able to answer all the questions. So if your question is not taken up or not answered here, please do not worry at all. You can post your question in the WhatsApp group. I'll be answering each and every question. No question will be left unanswered. Okay. But if your question is not taken by Swamiji, please don't be angry. Please don't leave the group because it's happened in the past that somebody's question was not taken up. So they were so angry that my question was not answered and they left the group. Please don't do that. If you do that, you lose an opportunity to learn about this amazing therapy that we have. And then we have in the technical team, Himanshu Reddy. He takes care of all the uploads to the recordings upload to the dashboard, the written instructions. If your app is not working, he's the person who you'll be getting help from. And then we have a special team, personal support team, who will be calling each and every participant to make sure that your program is going on fine, that you are understanding properly, that you are able to understand and do the kriyas. If any problem is there, they'll be talking to you one-on-one on the phone. So we've taken a lot of care and a lot of multi-tier support has been given, like the recording, the written instruction, then personal support, because online programs normally they are a bit different from the physical programs that you must have attended somewhere else. So we've taken each and every, whatever we can from our side, we've put everything into place and we've taken proper measures to do it. So with this, I come to the end of my part. Thank you and namaskar. I hand over the webinar back to Rachna ji. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details with our participants. Now we will be taking up the questions. Let me check if Swamiji has joined in. He just sent me a message. He'll be live at 7:40. He'll be there. But we can take Okay. up some questions which are general Okay. questions. Ye therapy free or payable? So Anima ma'am, this is payable. This is Anilji has already shared the program details and where it's been mentioned. This is not a free program. You get a lot of free things on YouTube. So ours is a payable program. Sisir sir, how and where we will be trained with Kumbhak therapy? Is it true? Just a sec. So Sisir sir, this will be taught to you on Zoom. So we will, if in case you're not able to, handle Zoom or you're not comfortable, we will give you the entire instructions and our technical team will help you install Zoom as well. So don't worry about how you're going to attend the classes. It will be totally online and on Zoom. Shiban K. Nagari sir, do we have to stop other meditation kriya during the program? Definitely not. You don't need to stop anything.
Just only the pranayams or a breathing exercise where there is fast exhalation, you need to stop for the time being. Because in our program, you have to just focus on very, very slow exhalation. Okay, what will be the batch size, Nupur ma'am? So the batch size is approximately, say, 40 to 50 participants in one batch. Does it help in depression? So it actually helps in depression in the sense it works on the mind and the body. So depression is a part of the mind which on which the Kumbhak therapy works. Okay, any other questions before Swamiji joins in? So you all can write your question. Yeah, many people have written. Yes. Many How people do you have observe written. participants with such a big batch size? So, Nupur ma'am, when the batch size is big, we divide it into two. It depends from every week. If the batch size is, say, around 55, 60, it is divided into two groups. And there are two mentors, separate mentors for it. So it depends on week to week. And we have the mentors watching each and every participant with their videos on, and after the mentor shows the kriya live, he or she ensures that the participants are doing the kriyas in front of the mentors with their video on, and that's how we observe the participants. And we've already have 3,000 plus participants who've gained a lot of benefit from this program. Okay. So there are some questions which once Swamiji joins in, we will be answering. So I'll just answer the general questions. My father has COPD problem as he is elderly. Can I do the class? You can definitely do the class, but for COPD, which is a lungs related problem, you can give your number. So our program will not be beneficial for you. Our sister concern runs a program on respiratory problems. So we can recommend the name to you and you can contact them and do the course henceforth. Okay. Okay. Vidya Sherkhane ma'am, can you help a left side paralyzed patient? So we've got a testimony where a paralyzed patient was slowly recovering, but it will take a lot of time. So you have to be patient. But we definitely, excuse me, can treat a paralyzed patient through Ashtanga Chikitsa. Shall I do treatment to others after completing the course? Shibantham, sir, what is your disease, if you can mention? Then I'll be able to brief you about it. In the meanwhile, Swamiji has just joined in. So I'll just put him on spotlight. Thank you, Swamiji. Good evening. Namaste. So we'll take up the questions one by one. Okay.
Varsha ma'am talks about Marma Chikitsa will also be taught kya? Yes, the one of the three things that we'll teach you is Anganyasa. Anganyasa basically is Marma Chikitsa. So there are certain marmas in your body, and you do movement and pressure on those points with a certain kumbhak. So that will be taught in the program. Okay. The next question is from okay. Just 1 minute. Is it helpful in curing meniscal tear? Preeti Grover ma'am. It is all about handling why meniscus tear happens. So when we say, now what keeps your organ and your tissues integrated? आपके शरीर के मसल्स को जो टिश्यूज हैं, बेसिकली बोन के टिश्यू हैं, अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज द इंटीग्रिटी फैक्टर ऑफ दोस टिश्यू हैज बिकम वेरी लेस. So osteoporosis. Now, one of the reason why osteoarthritis is happening is because you are losing the integrity of bones. That is why there is inflammation. Why there is inflammation? Because any kind of a movement or stress or pressure makes it inflamed. It creates damage basically. So the integrity factor of your tissues is something that has been lost. What is that thing which integrates tissue? The cohesiveness between each cells integrates tissues. The holding factor between cells integrates the tissue. Now, how you can understand that holding factor? So what is the holding factor? What is that aspect which integrates you as an organism, as a life? जीवन, एक जीवित प्राणी के रूप में आपके अलग अलग आयामों को, फिजिकल, नॉन फिजिकल, सभी को इंटीग्रेट कौन कर रहा है? होल्ड किसने करके रखा हुआ है? So there must be some kind of a holding factor. Now you can correlate that with breath hold, because any kind of effort that you make, कोई भी जोर आप लगाते हैं लाइफ में, चाहे शरीर से लगाते हैं, चाहे माइंड से लगाते हैं, चाहे इमोशन से लगाते हैं, किसी तरीके का भी एफर्ट आप लगाते हैं तो उसमें पीछे आप देखेंगे सांस रोक के एफर्ट लगाया जा सकता है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है. यानी आपको इंटीग्रेट करके एक्शन क्या करवाता है? आपका होल्डिंग फैक्टर, दैट इज योर कुंभक. नाउ इफ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैज बिकम वीक, और इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं. टुडे पीपल्स माइंड इज टू मच डिसइंटीग्रेटेड. लोगों को नींद नहीं आती है, कैंसर हो रहा है. कैंसर का मतलब टिश्यू डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है टिश्यूज का. तो कहीं ग्रोथ हो रही है, कहीं ग्रोथ नहीं हो रही है. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैज बिकम लेस. That is cancer. Now your metabolism is weak. आपका मेटाबॉलिज्म खराब है. यानी मेटाबॉलिज्म खराब है, कैसे पता चलेगा? डायबिटीज है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब है. यानी मेटाबॉलिज्म का इंटीग्रेटिंग फैक्टर खराब है, कुंभक खराब है आपका, होल जिससे कि वो काम होता है वो खराब है. तो टेयर क्यों हो रहा है? अभी भी देखेंगे थायराइड में क्या होता है, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाता है. देन वेट गेन का बड़ा इश्यू है. देयर इज लॉट ऑफ, कोई चीज इस्तेमाल नहीं हो पा रही ठीक से. सो फैट बहुत ही ज्यादा बॉडी में आ रहा है, या फिर वाटर रिटेंशन, या फिर गैस रिटेंशन, गैस बन रही है.
है ना। तो काम नहीं हो रहा तो कहीं पर डिपोजिशन हो रहा है, डायबिटीज में वेट लॉस हो रहा है, चोट लग जाती है ठीक नहीं होता, इम्यूनिटी ठीक नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर खराब। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक होगा तो मेनिस्कस टेयर क्या, हार्ट अटैक आएगा तब भी आपको कुछ नहीं। वी हैव लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट। ऐसा नहीं कि ऐसे बोल रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत सैकड़ों केस है, सैकड़ों केस है, एक दो तीन नहीं। सो व्हाट आर यू डूइंग टू ब्रिंग बैक द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इसी को दूसरे रूप में भी मैं बता सकता हूं, देखिए आपको मैं कितने ही हजार तरीके से समझा सकता हूं। टॉलरेंस कम हो रहा है कि नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कम होगा, इसका मतलब बॉडी का टॉलरेंस कम हो जाएगा ना, सहने की क्षमता कम हो जाएगी। तो याद कीजिए अपने दादा दादी नाना नानी, याद कीजिए कैसा खाते थे, उनको भोजन में क्या मिलता था, आपको क्या मिलता, उनको कितना जोर कितना एफर्ट करना, उनकी लाइफ मुश्किल थी, लाइफ वॉज डिफिकल्ट फॉर देम, फॉर योर एंसेस्टर्स, लेकिन वो इतने जल्दी परेशान नहीं होते थे जितनी जितनी जल्दी आप हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। तो आपकी इंटीग्रिटी कम है ना, उनकी तो इंटीग्रिटी अच्छी थी, बहुत परेशान भी हो मुश्किल वक्त में भी वो इंटीग्रेटेड रहते थे, इतना परेशान नहीं होते थे। सिमिलरली उनको बीमारी नहीं होती थी, विथ लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन देयर बॉडी डिडंट यूज टू गेट इनटू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो टॉलरेंस ज्यादा था ना, टॉलरेंस आपका कम है, जरा सा इधर उधर कुछ हुआ तो आपका टॉलरेंस बस गड़बड़ हो जाता। सो आपने कुछ खराब खा लिया तो पता चला शुगर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हो रहा है, मौसम बदल गया, ब्लड प्रेशर, सांस नहीं ले पा रहे, है ना। टॉलरेंस ऑफ योर बॉडी हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली। व्हाट इज टॉलरेंस? व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस अंग्रेजी का शब्द है, बोलने में तो ऐसा लगता है जैसे हम भी अंग्रेज बन गए, बड़ा अच्छा हो गया, समझ में नहीं आता। अंग्रेजों ने कितनी सारी चीजें शब्द बना दिए, ठीक तो कुछ भी नहीं करते ना। तो टॉलरेंस का मतलब क्या है? आप 10 किलो का वेट उठाओ, ये सब एक्सपेरिमेंट करें। आप सभी इंटेलिजेंट लोग, आप सभी को लाइफ का सेंस है। देखो, जिसको भी जन्म दिया गया उसको जीवन का सेंस दिया ही गया है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम पता नहीं क्या क्या पढ़ लिख रहे हैं। द मोमेंट वी गेट एजुकेटेड आवर सेंस ऑफ लाइफ गोज डाउन। जीवन का सेंस ही खत्म हो जाता है हमारे अंदर, क्योंकि हमको रोबोट की तरह कुछ समझा दिया जाता है, हम वही सोचते हैं। तो 10 किलो वेट उठाओ, क्या करके वेट उठाएंगे? सांस रोक के वेट उठाएंगे? बिना सांस रोक के वेट नहीं उठा सकते आप। अब आपको 10 किलो का टॉलरेंस सपोज कीजिए आपके लिए आसान है उठाना, तो टॉलरेंस आपका कितना? 10 किलो का। अब 20 किलो का टॉलरेंस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सांस रोकने की क्षमता ज्यादा करनी पड़ेगी कि नहीं? तो 20 किलो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या आप वो कर रहे हैं? टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं। अब न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आ गया, जॉइंट का इश्यू, हड्डियों का इश्यू आ गया, अगर बॉडी का टॉलरेंस और कम है तो टॉलरेंस तो बढ़ा लो, लाइफ आसान हो जाएगी कम से कम। चल फिर काम तो कर पाएंगे, लाइफ तो जी पाएंगे। आजकल तो दवाई खा के तो लाइफ भी नहीं जी पा रहे, नंबनेस हो रहा है, दवाई खा के नंब कर रहे हो ना अपने आप को। एक ही दवाई काम करती है, दर्द की दवाई। इन्फेक्शन को हटा दिया जाए तो कोई दवाई काम नहीं करती। डायबिटीज ठीक हुआ कोई एक इंसान बता दो, 100 साल में बता दो कोई ठीक हो गया तो दवाई खा के। थायराइड का मरीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कोई भी किडनी का इश्यू, कोई भी बता दो, एक आदमी बता दो दवाई खा के ठीक हो गया। तो दवाई तो नहीं ठीक करता, आपको नंब कर देता, ताकि आपको थोड़ा कम पता है। दर्द की दवाई केवल काम कर, इनसेंसिटिव बना देती है आपको। इनसेंसिटिव बनाना लाइफ नहीं होता। आप जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर लीजिए, मगर अपना तो टॉलरेंस बढ़ाओ। आप बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो काम कर पाएंगे, जी पाएंगे, आगे प्रॉब्लम कम आएगी। अगर ऑर्गन फंक्शन, ऑर्गन स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो फिर आप यू कैन रिकवर फ्रॉम ऑल दोज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा तो कम से कम जीने का मन करेगा, मन में खुशी रहेगी, चल पाएंगे और काम कर पाएंगे, खा पाएंगे, भूख लगेगी, हाँ, और हजम भी होगा। नहीं तो खाएंगे तो टेंशन क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगा, पता चला हजम नहीं हुआ तो और कोई इश्यू आ जाएंगे। तो सो टॉलरेंस इंक्रीज कीजिए। तो 2 तरीके से मैंने बताया, ठीक है ना। 2 तरीके से इंटीग्रिटी बढ़ाइए, टॉलरेंस इंक्रीज कीजिए। और भी बता सकते हैं,
तो आगे क्वेश्चन में देखते हैं और बताते हैं। Anu ma'am writes about, does this help in dementia, Alzheimer's? What is dementia? Alzheimer, what is Alzheimer? अल्जाइमर में तो आपका कंट्रोल नहीं होता ना हाथ पांव। अल्जाइमर में क्या हो रहा है, कांप रहे ना हाथ पांव, कंट्रोल में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए आपको कंट्रोल करना है किसी चीज को, आप एक लंबा सा डंडा लो और एक पत्थर को इधर से उधर करने की कोशिश करो। क्या करना है, एक्सपेरिमेंट क्या करो, आपको सबको एक्चुअली मालूम है, मैं बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा। एक लंबा सा डंडा लीजिए और एक पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करो, है ना। कैसे शिफ्ट कर पाएंगे बताइए। आपकी सांस रोकने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतना आप कंट्रोल में कर पाएंगे, अगर नहीं हुआ तो हिलेंगे। व्हाट इज अल्जाइमर? योर कंट्रोल ऑफ द बॉडी हैज गॉन। कंट्रोल का मतलब क्या है, आपकी सांस रोकने की क्षमता गई, तो लाना है कि नहीं लाना। द ओनली क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज मेडिसिन विल नॉट हेल्प यू कम आउट। अल्जाइमर मेडिसिन तो ठीक होता नहीं है। पहला पार्ट डिमेंशिया। व्हेन वी से डिमेंशिया, जब हम डिमेंशिया के, याददाश्त नहीं रह रही ना, प्लीज कन्वर्ट द ग्रीको रोमन वर्ड टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये ग्रीको रोमन शब्दावली जो आपको सुनाई बताई जाती है उसको अपनी समझ में लेके आए, तब आपको इंटेलिजेंट हैं। ये केवल शब्द बोलने से इंटेलिजेंट नहीं हो जाते। इफ यू जस्ट टॉक अबाउट डिमेंशिया, बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता, क्योंकि डिमेंशिया बोल के 100 साल में डिमेंशिया का इलाज नहीं मिला। ये फिरंगी बुद्धि ऐसी होती है, आप लोग इसमें फंसे जा रहे हो। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज याद नहीं रख पाते, मगर याद कैसे रखते हैं, याद कैसे रखते हैं। पहला पार्ट, आप याद कैसे करते हैं। सो विल यू बी, आर यू रेडी टू डू एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करें अभी। सारे लोगों का तो स्क्रीन बंद होता है। यू ज्वाइन द वेबिनार बट यू डोंट वांट समबडी टू लुक एट यू। अच्छी बात नहीं है ना, जितना इन्वॉल्व करो। देखो लाइफ जो है, आप इसे पकड़ के तो नहीं रख सकते। बचा सकते हो क्या? नहीं, रोक के नहीं रख सकते। सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ लाइफ? You should involve yourself. That is the only thing you can do. Either involve with life or don't involve. यही चॉइस है ना, और तो कोई चॉइस नहीं है। कितना भी बीमारी हो आपके साथ में, मुझे बताओ, कितना भी बीमारी हो, परेशानी हो, the only choice you have is either you involve with life or don't involve with. अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो पहले पैदा क्यों हुए आप? तो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लाइफ का। तो इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। याद कीजिए, जस्ट रिमेंबर द सेम डे। आज क्या 6 जुलाई है ना, 6 जुलाई है। आपको 6 जुलाई पिछले साल का याद है? ब्लंटली मना कर देंगे, नहीं याद ही नहीं है, तब तो याद करने का एफर्ट भी नहीं करोगे। अच्छा, थोड़ा और कम आते हैं। जिन लोगों का बर्थडे गया 2-3 महीना पहले, उनका याद है? वो दिन याद है? चलो, अब उम्र आ गई शायद बहुत लोगों की, तो नहीं याद होगा। और आसान करते हैं, और आसान करते हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? 8 बजने वाले हैं। आपको कल शाम के 8 बजे का टाइम याद है? बहुत लोगों के लिए वो भी मुश्किल है। ओके, अब मैं और आसान कर रहा हूं इसको। देखिए हमारी हालत क्या हो गई है। और आसान कर रहा हूं। दोपहर में लंच क्या क्या किया था उसको देखिए आंख बंद करके। एग्जैक्टली देखिए आपने क्या खाया। व्हाट लंच यू हैड इन द आफ्टरनून। आंख बंद करो, उसको देखने की कोशिश करो और देखो कि आप याद करने के लिए क्या करते हैं। आप देखेंगे अपनी सांस को धीमा कर देते हैं
ऑलमोस्ट यू स्टॉप इट। अगर नहीं रोक पा रहे इसका मतलब फोकस नहीं हो रहा आपका, वो क्षमता ही कमजोर है। अच्छा, मेरे अंगूठे को देख पा रहे, अंगूठे के टिप को जरा फोकस करो, उसके टिप को देखना, बिल्कुल मुझे नहीं देखना, टिप को देखना, बिल्कुल टिप के, अंगूठे के टिप को देखना, ऊपर के हिस्से को, मुझे नहीं देखना। ये फोकस बनाने के लिए क्या कर रहे हो? सांस रोक रहे हो? तो मेमोरी, अगर आपकी याददाश्त ठीक नहीं है तो आप क्या नहीं कर पा रहे जिसे याद नहीं। देखो, आपके बॉडी में, आपके माइंड में तो मेमोरी होता ही है, तो और माइंड यहां नहीं होता, ये गलत फहमी है आपकी। माइंड आपके पूरे शरीर में होता है। तो कुछ भी करते हैं जाने अनजाने, हर चीज का इंप्रेशन आपके माइंड पे होता ही है, अवॉइड आप कर ही नहीं सकते। आप शायद जीना नहीं चाह रहे, आप शायद इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। याद है, आप जिस चीज के साथ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो याद रहता है। आप वो इंसिडेंस जो आपको बहुत या तो दुख दे गया या तो बहुत खुशी दे गया, वो हमेशा याद रहता है, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो जिस चीज का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा होता है वो आपको याद रहता है। अगर आपका सेंसिटिविटी बॉडी का, नर्व का सेंसिटिविटी, ठीक है, जिससे इमोशंस आपके अटैच हैं, वो अगर बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर, तो आपको हर इंप्रेशन बॉडी पे जो है वो याद रहेगा। ठीक है, या तो न्यूरो रीजनरेशन, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए। लेकिन फंडामेंटली मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आप अपनी सांस रोकने की क्षमता को, कैपेसिटी को बढ़ा देंगे तो दोनों चीज होगा। नर्व का रीजनरेशन होगा, किसी ने बोला ड्रॉप फुट है, ठीक है, माइसीना ग्रेविस या इस तरीके का, लॉक जॉ हो रहा है, टेनिस एल्बो हो रहा है, और भी इस तरीके का कोई नर्व का इश्यू आ रहा है, जैसे न्यूरोपैथी का, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाता है, या वैसे भी न्यूरोपैथी हो गया, तो नर्व का कोई भी इश्यू है, वहां पे न्यूरो रीजनरेशन, नर्व का रीजनरेशन नहीं हो पा रहा, तो अगर अपना ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो न्यूरो रीजनरेशन बढ़ जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास ये सारे केस ठीक हो जाते हैं, बहुत केसेस है हमारे पास में ऐसे जो ठीक हो जाते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा एक और चीज बता रहा हूं, मेमोरी ब्रेथ होल्ड करने से ना, मेमोरी वापस, आपको अगर याददाश्त वापस लाना है तो ये तरीका है जिससे आप याद करते हैं, तो ये इसी को बढ़ा देंगे तो आप याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। मेरी मेमोरी बहुत खराब थी, आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूं। इतनी खराब मेमोरी थी, शायद आप लोगों में से कोई भी इतना खराब तो नहीं होगा, इतना खराब नहीं होगा, इतनी खराब मेमोरी थी। आज मैं धारा प्रवाह बोलता हूं, कभी लिखता नहीं, कभी कहीं पर भी किसी भी फोरम में बोलता हूं तो मैं वैसे ही बोलता हूं, याद से ही बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी याददाश्त कौन वापस लेके आया? जैसे याददाश्त बनती है, कुंभक याददाश्त बनाती भी है, और उसको आप अगर वापस लाना चाहें तो आप वापस ला सकते हैं। कुंभक करेंगे, सबकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, डिमेंशिया चला जाएगा, सिंपल सी बात। Next question. Okay, next question is from Dhanalakshmi ma'am. Is it helpful in tailbone or coccyx pain? देखो, टेलबोन पेन इज समथिंग, जब इसके 2-3 रीजन मैं आपको बता देता हूं, और भी रीजन बता सकते हैं, कि वो रीजन आप सही कर लीजिए एंड देयर विल बी जस्ट द क्वेश्चन ऑफ टाइम, कि आपको कितने समय तक उस पर काम करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर मोमेंटम ऑफ डिजीज। आपने बीमारी को कितनी स्पीड में बढ़ा दिया अपनी बॉडी में, केवल उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइम कितना लगेगा। किसी को 6 महीना, किसी को साल भर, किसी को 2-3 साल तक लग सकता है, मगर 100% ये रिवर्सेबल है। क्यों रिवर्सेबल है? पहली बात तो क्यों रिवर्सेबल? सबसे आसान तरीके से थोड़ा थोड़ा और
ज्यादा बेटर इसको समझने की कोशिश। सबसे आसान तरीका समझने का क्या है, जो कि नॉर्मली हम सभी ऐसे ही जाते हैं ना, टेल बोन पेन है तो यानी टेल बोन के आसपास में मसल्स कम है, बहुत कम है, ठीक है, इतनी सी बात। हम कहते हैं वहां पे मसल्स कम है, या वहां पे कोई फ्रैक्चर हुआ, यहां पे कोई चोट लगी, या वो वीक एरिया है, तो उसकी वजह से। वीक एरिया क्यों? क्योंकि मसल्स कमजोर है। फ्रैक्चर हुआ तो ठीक हो जाता है वो। अगर उसमें अलाइनमेंट बिगड़ गया, टेल बोन थोड़ा इधर उधर हो गया, तो क्या उसमें हमेशा पेन रहेगा? नहीं 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 नहीं, इसकी वजह से। पहली बात आप समझिए, हड्डी टूटने की वजह से, टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से तो बॉडी में पेन नहीं होता है। ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आप उसे सर्जरी करने का ये बहाना है। आप सर्जरी करके सीधा करवा लो, क्या वो सही हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला, ट्राई करके देख लो। तो टेढ़े मेढ़े बोन से पेन नहीं होता, टेढ़े मेढ़े बोन से पेन नहीं, इन्फ्लेमेशन से पेन होता। अगर उस एरिया में हमेशा दबाव पड़े और वो झेल नहीं पाए, तभी पेन होगा। अगर दबाव पड़े और वो झेल पाए तो पेन नहीं होगा। यही तो आपके यंग एज में होता था। आप कितना भी बॉडी के साथ में खेल करते थे, कितना भी प्रेशर डालते थे, टेढ़ा मेढ़ा करते थे, वो वापस रिकवर कर देता था। तो एक तो बात यह कि क्या हम दोबारा से मसल को रीजनरेट कर सकते हैं? पहली बात, जैसे मैंने बताया, हां, अगर अपने मेटाबॉलिज्म को आप अच्छा कर लेंगे तो रीजनरेशन आपका बढ़ ही जाएगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है सब। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई भी दवाई आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक नहीं करती, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नेचुरल हो। नेचुरल फिर भी सपोर्टिव ज्यादा होता है केमिकल के मुकाबले। केमिकल दवाई आपके मेटाबॉलिज्म को खराब करती है। तो केमिकल दवाई बहुत अर्जेंट हो तभी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करना चाहिए आपको, लेकिन तभी जब आप अपने बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ स्ट्रांग कर दें। अगर आपके बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ ठीक नहीं है तो केमिकल दवाई के साइड इफेक्ट से आपका बॉडी और खराब हो जाएगा। तो इसलिए मेडिसिन अगर आपको लेना है तो अपनी बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ पहले, टॉलरेंस पहले बढ़ाना पड़ेगा, जो कि कोई भी नहीं कर रहा। इसलिए केमिकल दवाई लॉन्ग टर्म यूज करने के कारण सभी क्रैश कर रहे हैं। डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, कैंसर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12%, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑलरेडी हैज बिकम एपिडेमिक, मेंटल डिजीज हैज बिकम एपिडेमिक। क्या कम कर रहा हूं? कुछ भी कम नहीं कर। तो अगर टॉलरेंस बढ़ाएंगे तभी आप केमिकल दवाई लेने के लायक भी बनेंगे। लेकिन ये सभी, केमिकल हो चाहे नॉन केमिकल, ये सपोर्ट करता है। अगर अच्छा भोजन करेंगे ठीक हो जाएंगे? नहीं, भोजन आपको ठीक नहीं करता, आपके बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ ठीक करता है। भोजन पचाने के लिए भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, मालूम है? तो रिकवरी स्ट्रेंथ, अगर आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपकी बॉडी रिकवर करती है। दवाई से कोई भी रिकवरी नहीं होती, ये बात आप समझ लीजिए। तो मेटाबॉलिज्म अगर आप बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? आपके भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता। आप भोजन लेते हैं, उसको कितना आपका शरीर इस्तेमाल कर सकता है, दैट स्ट्रेंथ इज मेटाबॉलिज्म। तो आपका बॉडी जब भोजन लेंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स करता है, कोई गलत चीज जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। ये दो रिस्पॉन्स आपका बॉडी करता है। अब आप दवाई डालोगे तो ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स खराब होगा, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा, कंफ्यूज होगा। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो आप केमिकल लेते हो, आपका भोजन ही जो है वो रिस्क बन गया आपके बॉडी के लिए, क्योंकि हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड भोजन जब आप लेते हैं तो वो रिस्क है बॉडी के लिए। इसलिए सभी लोगों का मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है बॉडी का, खराब हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्शन खराब हो, इम्यून रेस्पॉन्स कंफ्यूज हो रहा है। और एक बात बताऊं मैं आपको, मालूम है बोन की ज्यादातर प्रॉब्लम इज अ काइंड ऑफ एलर्जी। फिर से बता रहा हूं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च करना चाहिए। सो आपको मालूम है डायबिटीज जो है, इट्स एन एलर्जी टू इंसुलिन। थायराइड जो है, इट्स एन एलर्जी टू प्रोटीन।
अभी जितना भी रिसर्च हुआ दुनिया में, आपको लगता है बहुत रिसर्च हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। एक भी इंसान हम ठीक नहीं किया तो कौन सा रिसर्च कर दिया हमने? किसी को मालूम ही नहीं है डायबिटीज क्या होती है, थायराइड क्या होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज क्या होता है, कैंसर क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर करके, किसी को मालूम ही नहीं है। गूगल करके देख लीजिए, वो कहेंगे कि नहीं मालूम क्यों होता। जिसको कुछ नहीं मालूम वो तो आज की दुनिया में ट्रीटमेंट कर रहे हैं सारा का सारा। बड़ी विडंबना है साहब, क्या करें। तो हिस्टामिन इनटॉलरेंस जरा आप गूगल करके देखें, आपको पता चलेगा। हिस्टामिन इनटॉलरेंस, हिस्टामिन आपके शरीर में किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करवाता है, क्योंकि आपका भोजन भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, मालूम है? शरीर से बाहर ही आता है, बाहर से ही आता है ना। आपके केमिकल भी बाहर से आते हैं सारे। आप सांस भी जो ले रहे हैं उसमें बाहर से हवा ले रहे हैं। तो हिस्टामिन वो चीज है आपके शरीर में जो एक्सेप्टेंस करवाता है इस बाहरी चीज का। अगर यही इनटॉलरेंस होने लग जाए तो आपको बहुत सारी चीजों से एलर्जी होगी जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप देखेंगे, अच्छा मौसम बदलते ही जैसे बारिश का मौसम है, कुछ लोगों को बड़ी बढ़ जाती है प्रॉब्लम। ठंड का मौसम शुरू हुआ, पोलन का मौसम शुरू हुआ, बढ़ जाती है प्रॉब्लम। कुछ खा लिया, पता भी नहीं चला, प्रॉब्लम बढ़ गए। तो बेसिकली आपके हिस्टामिन इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में, खास करके बोन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आएंगे ना, और नर्व से लेके बोन और नर्व, तो इसमें हिस्टामिन इंटॉलरेंस का बड़ा रोल है। अच्छा, हिस्टामिन इंटॉलरेंस की बात है, एलर्जी की बात जहां तक है, तो ये बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, खास करके एलोपैथिक टर्म्स में हम अगर बात करें तो वो लोग इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, और भी बहुत रिसर्च करने की जरूरत है इस एरिया में। वापस शुरुआत में जो बताया था उसे जोड़ के देखो, टॉलरेंस बढ़ाने से ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम इनटॉलरेंस है, जैसे बताया इंसुलिन इनटॉलरेंस, हाँ, प्रोटीन इनटॉलरेंस, फॉरेन बॉडी इनटॉलरेंस, हिस्टामिन इनटॉलरेंस, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी इनटॉलरेंस की वजह से। वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी क्रैश कर रहे हैं। टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये एलर्जीज और ये सब प्रॉब्लम बहुत जल्दी निकल जाएगी। मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे। मेटाबॉलिज्म कुंभक करते ही एक चीज सभी बताते हैं कि हमारी भूख बढ़ गई, मेटाबॉलिक हीट बढ़ गई। कुंभक करते ही लोगों के अंदर, शरीर के अंदर गर्मी भी बढ़ती है। जो लोग का मेटाबॉलिक हीट कम होता है वो बढ़ जाता है, तो देखेंगे पाचन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इस तरीके की चीजें बढ़ जाएंगी। आपकी डेफिशिएंसीज कम होने लग जाएंगी, टिश्यूज ज्यादा अच्छे बनने लग जाएंगे, तो आप मसल टिश्यू भी आपके ठीक बनेंगे जहां पे जरूरत है। तो पहली बात, जो प्रॉब्लम को टॉलरेट करने की शक्ति जैसे ही ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम आपको कम लगेगी। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे तो एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो है रीजेनरेशन, मसल्स का, बोन का रीजेनरेशन, बोन का डेंसिटी अच्छा होना, ये सब होगा। अच्छा, आपकी एलर्जी जैसे ही कम होगी तो आप यू विल गो थ्रू योर लाइफ प्रिटी स्मूथली, मच मोर बेटर देन बिफोर। पहले से बहुत अच्छी तरीके से जीवन को जी पाएंगे, फंक्शन कर पाएंगे, यानी बॉडी का इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, और थोड़ा टेक्निकल हो जाए, अगर और थोड़ा टेक्निकल होके बताएं तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें दो तरीके का फोर्स होता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को उदान कहते हैं, नीचे वाले को अपान कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप 33 पत्थर, चपटे पत्थर ले लें, ड्रिल करें और रस्सी बीच में डाल के खींच लें, तो सारी आपकी रीढ़ की हड्डी या वो स्टोन्स अलाइन हो जाएंगे। तो आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर ये फैक्टर, दोनों का पुल अगर ठीक नहीं हुआ, तब तक आपके जो टेल बोन है उस पर प्रेशर जाएगा नहीं। तो ये प्रोसेस हमारे प्रोग्राम के अंदर है ही। तीसरी चीज जो बता रहा हूं, एक चीज आती है जो आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करती, उसको कहते हैं व्यान शक्ति, उसको कहते हैं व्यान शक्ति। तो जो हम सिखाते हैं कुंभक थेरेपी में, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट है, तीसरे पार्ट में व्यान क्रिया कुंभक हम बताते हैं, तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाता है। चौथा पार्ट, बॉडी में अलाइनमेंट नहीं हो तो भी, अगर यूनिडायरेक्शन, अगर डिविएटेड प्रेशर हो आपकी बॉडी में, यानी एक तरफ ज्यादा प्रेशर लग रहा है दूसरी तरफ कम,
तो भी आप देखेंगे वो रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा असर करेगा और सबसे ज्यादा नीचे वाले पार्ट पे, कमर पे या टेल पे सबसे ज्यादा असर करेगा। तो अलाइनमेंट अगर नहीं करेंगे तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो अलाइनमेंट 3 तरीके की होती है, नाभि, कौड़ी, नले। चेस्ट का अलाइनमेंट, नाभि का अलाइनमेंट और थाइस का अलाइनमेंट। नाभि, कौड़ी, नले, ये तीनों का अलाइनमेंट हमारे प्रोग्राम में बिल्ड इन है। तीनों का अलाइनमेंट आप करते हैं तो आप देखेंगे बॉडी हल्का भी हो जाएगा, इसको कैरी करना बड़ा आसान लगेगा आपको। सो देर इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड मेथडोलॉजी टू डू ऑल दोज 4 थिंग्स, वो प्रोग्राम में इनबिल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ma'am, Sangeeta ma'am talks about digestion, hair loss, muscle weakness. डाइजेशन, अच्छा, डाइजेशन का एक फैक्टर मैंने बता दिया कि अगर आपका जैसे कहते हैं हम जठराग्नि अगर ठीक नहीं है, बॉडी में हीट प्रोड्यूसिंग एबिलिटी अगर नहीं है, जठराग्नि ठीक नहीं, तो डाइजेशन ठीक नहीं हो सकता। पहली चीज आपकी नाभि का अलाइनमेंट करना चाहिए आपको, ज्यादातर लोगों की नाभि का अलाइनमेंट ठीक नहीं है। दूसरी बात, जठराग्नि बढ़ानी चाहिए। जठराग्नि बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बॉडी की एक्टिविटी भी करें तो इनडायरेक्टली जठराग्नि बढ़ती है। मगर अगर आप डायरेक्टली बढ़ाना चाहते हैं तो कुंभक डायरेक्ट मेथड है जठराग्नि बढ़ाने का, है ना। और भी ज्यादा अग्नि आपके शरीर की बढ़ेगी, जिसे हम इस अम्ब्रेला को गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, डाइजेशन केवल और केवल आपका काम नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। डाइजेशन के लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज जरूरी होते हैं आपके शरीर के अंदर। अब आपने केमिकल डाल के बैक्टीरिया को मार दिया, क्योंकि आप जब भी दवाई खाते हैं, जब भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जब भी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं, ऐसा कोई ड्रिंक पीते हैं विच इज आर्टिफिशियल, हर चीज में आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ केमिकल तो होता और जब भी आप भोजन ऐसा करते हैं जो कि सीजन के विरुद्ध है, जैसे गर्मी के सीजन में सेब खाना या सेब का जूस पीना या ऑरेंज का जूस पीना, क्योंकि वो गर्मी का फल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप फ्रीज करके उसको रख सकते हैं आज के टाइम पे, लेकिन जैसे ही वो करते हैं आपकी जठराग्नि खराब हो जाती है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, गट माइक्रोबायोटा को आपको हैंडल करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। गट माइक्रोबायोटा यानी गट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक रीजन गट माइक्रोबायोटा को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, बाहर से कोई प्रोबायोटिक लेके इसको बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में चलन था, कंजी, अचार, इस तरीके की चीजें, फर्मेंटेड चीजें खाते थे अलग अलग सीजन में, तो हमारा गट माइक्रोबायोटा ठीक रहता था। अब वो मार्केट से खरीदते हैं, उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं, गट माइक्रोबायोटा को बढ़ाएगा क्या, वो तो खराब भी करता है। लेकिन दूसरा कारण क्या है, अगर आपका डाइजेशन खराब होगा तो भी आपका गट माइक्रोबायोटा सही नहीं रह पाएगा। तो एक कारण तो आपको बता दिया हमने कि अगर नाभि को ठीक करेंगे तो डाइजेशन इंप्रूव होगा। दूसरी चीज, आप डाइजेस्टिव हीट को अगर रेगुलेट करेंगे, जठराग्नि को अगर रेगुलेट करेंगे, तो जठराग्नि अपने हिसाब से गट माइक्रोबायोटा को मैनेज करती है, ठीक है। और डाइजेशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर अभी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी इसकी बहुत कम है, अगर इसकी बढ़ जाएगी तो एनीवे आपको ज्यादा फंक्शन, काम करने का मन करेगा। जितना शरीर से काम लेंगे उतना अच्छे आपकी डाइजेशन रहेगी। ये ऐसा ही सिंपल है। इसके अलावा कुंभक आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिसके कारण आपको पता चलता है कि मेरी बॉडी को क्या पसंद है इस वक्त में, मुझे क्या मन कर रहा है खाने का, और उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपकी बॉडी रिकवर करती है, वही आपका मेडिसिन बन जाता है। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए, अलाइनमेंट आपको जरूर करना चाहिए, जठराग्नि को बढ़ाना चाहिए, तभी पॉसिबल है डाइजेशन को इंप्रूव करना, कर पाना। अच्छा, एक और पक्ष जो है वो मैं आपको बता देता हूं।
आपके बॉडी में कोई भी चीज स्टैग्नेंट नहीं होती, रुकती नहीं, हमेशा एक डायरेक्शन में चलती है। सपोज कीजिए आपके शरीर में किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई भी चीज मूव नहीं कर पाती ठीक से, यानी आप ऊपर से खाते हैं तो उसको नीचे 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 जाना चाहिए। तो किसी वजह से आपका डाइजेशन ठीक नहीं है और मूवमेंट ठीक नहीं है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक नहीं है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो फिर ये सारा मूवमेंट रुक जाता है। तो अगर इस मूवमेंट को ठीक करना, सपोज कीजिए आप पाइपलाइन है उसके अंदर कुछ 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 रुक रहा है, तो उसे निकालना है, तो सबसे आसान तरीका निकालने का क्या है, मूव कराने का क्या है, अंदर आपको प्रेशर देना पड़ेगा। अगर अंदर प्रेशर देंगे तो हर तरीके की मूवमेंट बढ़ेगी। तो कुंभक अंदर प्रेशर देना ही तो है, तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, हार्मोन फ्लो अच्छा होगा, लिम्फ फ्लो अच्छा होगा, मल का त्याग ठीक होगा, फूड का फ्लो अच्छा होगा, है ना। तो आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, आपका ईफ्लक्स भी इंप्रूव होता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है, कोई चीज रिटेंशन जो भी है वो नहीं होती है, तो आपका शरीर ठीक से काम कर पाता है। तो बाहर मूव करना तो न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए मुश्किल होता, चलना भी मुश्किल होता। तो आप एक्सरसाइज करने बोलेंगे तो आपके लिए तो बहुत बड़ा लोड है, और एक्सरसाइज करने से आजकल यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि अंदरूनी कमजोरी है, क्योंकि ऑर्गन कमजोर हैं। तो अगर अंदर प्रेशर अगर एक तरीके से आप देंगे तो ऑर्गन इंप्रूव होंगे, फ्लो इंप्रूव होगा, हार्मोन फंक्शन अच्छा होगा, ब्लड का फ्लो ठीक होगा, ब्लड का फंक्शन इंप्रूव होगा, और इस तरीके से अंदर से जब स्ट्रांग होंगे तो बाहर आप काम कर पाएंगे, और बाहर अगर आप लोड भी डालें तो आपके बॉडी को नुकसान नहीं होगा। तो ये तो जरूर करना चाहिए ना। Anybody from the participants who would like to ask their questions, please unmute yourself and you can raise your hands first. Anybody from the participants? हाँ मनमोहन जी, अनम्यूट करके पूछिए, अनम्यूट करके पूछो। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं क्या कोई डेमो देख करके बता सकते हैं, जो आपने कुंभक के बारे में बताया या अलाइनमेंट के बारे में बताया, कोई डेमो करके बता दो। आप कुंभक के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, दिन रात आप कुंभक ही कर रहे हैं। उंगलियां फंसाओ जरा और खींचो जरा, ऐसे उंगलियां फंसा के खींचो। कैसे खींचते हैं, पीछे देखो, सांस रोको। कुंभक के बगैर आप चल नहीं सकते, आप कुर्सी से नहीं उठ सकते, आप कुंभक कर ही रहे हो। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, इनहेलेशन, ब्रेथ होल्ड, एक्सहेलेशन। सपोज करो किसी क्या लिवर का इश्यू है, तो आप उसकी जरा सांस का नाक के पास ना जाके सांस जरा सुनिए। वो इंसान क्या कर रहा होगा, इनहेलेशन उसका छोटा होगा, एक्सहेलेशन बड़ा लंबा होगा। तो लिवर ठीक करना हो तो एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, मैं बता रहा हूं। डेमो अगर 5 सेकंड का इनहेलेशन करो, आप 20 सेकंड का होल्ड करो, 10 सेकंड का एक्सहेलेशन करो, तो 5, 20, 10 ये एक फॉर्मूला बन गया, इससे लिवर ठीक होना शुरू होता। मगर मैंने बताया ये कैच है। कैच क्या है, लिवर बिना हार्ट के काम नहीं करता, हार्ट बिना किडनी के काम नहीं करता, किडनी बिना लंग्स के काम नहीं करता। तो क्या केवल एक फॉर्मूला से काम नहीं होता, एक होलिस्टिक मेथड इस तरीके का आपको सिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आपको डायग्नोज करते हैं, आपको बोलते हैं ब्रेथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, इमोशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं। उसके बाद आप फॉर्म फिल करते हो, हमारे पास भेज दो, हम एनालाइज करते हैं उसको, हमको पता लग जाता है इसका इस बॉडी में कौन सा एस्पेक्ट वीक है। फिर क्या करते हैं, हम आपको एक होलिस्टिक जेनेरिक मेथड सिखाते हैं पहले, है ना। वो सिखाने के बाद में उसको कस्टमाइज कर देते हैं, उसको जैसे मैंने नंबर बताया ना, तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर देते हैं, ताकि वो एस्पेक्ट भी ठीक हो जो कि कोर प्रॉब्लम है, और पूरा होलिस्टिक एड्रेस भी हो जाए आपकी बॉडी। ये इसीलिए ये गाइडेड वे में ही करवाते हैं, इसको ऐसे नहीं बता सकते, जेनेरिक नहीं बता सकते। अच्छा, लेकिन आपको थोड़ा सा, हाँ हेलो स्वामी, सुन रहे हैं मेरे को? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, मैं कुंभक जो है, मेरे मुताबिक कुंभक जब हम मेडिटेशन करते हैं तो नीचे से जो हमारा पोर्शन होता है उसको हम दबाते हैं, तो उसको हम कुंभक बोलते हैं।
तो आपका कुंभक ये कोई अलग है? देखो, नीचे Meditation दबाने को हम करते हुए मूल बंद कहते हैं। नीचे मूल बंद, दबाने अच्छा, को अच्छा। मूल बंद कहते हैं। मूल हाँ। बंद करके हम अपनी एनर्जी को कहीं डायरेक्ट करते हैं, किसी दिशा में ले हाँ जी, हाँ जाते जी, हैं। हाँ ठीक है जी। ना, उसको हम कहते हैं प्राण आयाम, प्राणायाम कहते हैं, क्योंकि उसको हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं। ओके, ठीक है ना, हाँ जी। मगर प्राणायाम भी जो आप करते हैं या आप आसन करते हैं, वो कुंभक के बगैर नहीं कर सकते। कुंभक प्राणायाम से भी ज्यादा फंडामेंटल है आपकी लाइफ का, क्योंकि ठीक है। आपके कर्म भी कुंभक से बनते हैं। आपके इमोशन, आपकी इमेजिनेशन, आपकी मेमोरी, वो भी लाइफ का फॉर्म होना का फंडामेंटल नियम ही कुंभक है। कुंभक उससे भी पीछे जाता है। कुंभक आपके लाइफ का सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है, जिसके ऊपर आप सांस लेते हैं, जिसके ऊपर आपकी बॉडी फॉर्म होती है, जिसके ऊपर आपकी याददाश्त बनती है। आसानी के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि जब आप सांस रोकते हैं, वो रोकना कुंभक होता है। ओके। लेकिन किसी चीज का भी रोकना कुंभक होता है, केवल सांस का ही नहीं। तो जब आप बॉडी को मूव करते हैं, यानी सपोज कीजिए आपने बेंड किया बॉडी को, तो भी आपको सांस रोक के ही वो एफर्ट लगाना पड़ता है। तो कुंभक बहुत फंडामेंटल है। कोई भी एक्शन करेंगे, एक्शन का मूल कैसे कर पा रहे हैं, वो कुंभक। तो Thank हम you. पहली बार योगा की बात नहीं कर रहे, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे, ये मुक्ति की ट्रीटमेंट की बात बात हो रही है। हाँ, हम मुक्ति की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम योगा नहीं बोल रहे, क्योंकि फंडामेंटली योगा मुक्ति के लिए बना हुआ है, डिजाइंड है समाधि के लिए। हम्म। ठीक है ना, वो भी यूज करते हैं कुंभक को, समाधि के लिए कर सकते हैं, मगर बहुत एडवांस स्टेज में योगा में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, वो भी कुंभक को इस्तेमाल, जैसे कि आप कोई भी काम करने के लिए अपने बॉडी और माइंड को इस्तेमाल करते हो ना, चाहे दुनियादारी करने के लिए, चाहे सन्यास के लिए, चाहे वो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, आप बॉडी को ही तो इस्तेमाल करोगे। तो बॉडी कोई मुक्ति का पार्ट नहीं है या संसार का पार्ट नहीं है, आप इसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकते। वैसे ही जो जीवन बनाने का नियम है, उसको कैसे भी इस्तेमाल करो। हेल्थ के लिए इस्तेमाल करो या मुक्ति के लिए इस्तेमाल करो। हम हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये योगा नहीं है, ये योगा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये आपके शरीर को संसार में स्थापित करने का तरीका है, आप और अच्छे से जी पाएं, वो तरीका है। Hello, हाँ जी, बोलिए। I'm Jaya Balani. I Hello. just heard a lot about you, Swamiji. So Mhm. I just have diabetes, cholesterol, thyroid, BP, and bone density. So I am wanting to join your this Kumbhak, but at the moment I'm going to travel for some time. So with all this, 100% it will be fine. See, Kumbhak works 100%. That is for sure. Okay. The only thing is, there is another entity which is you who will be doing Kumbhak. Yes. So the only question is, are you committed towards it? See, we were fine when we were young, isn't it? Yes. And somehow we have lived in such a manner that we created some kind of difficulty. So whose Yes. doing is this? For whatever doing the only. reason of the disease, we have done it. Whatever the reason of disease, we have only done it. Yes. We can only correct it. If you do the right things will happen. But even if you come out of, there are people who will come out of all their problems after a certain period of time. When they stop their kumbhak and everything, they, after a certain period of time, they again get back to the same problem. But now you know how to come out of it. Once you learn kumbhak, you do kumbhak, and after a certain period of time you come out of all the problem, and then you drop kumbhak. But there is a chance, because of the kind of lifestyle, the kind of environment, and many other things, you might get into the problem after 1 year, 2 year, 3 year, depending upon how fine you live. But again you have created it, so you can come out of it.
So we You must can continue. come out of, doing it. you know now how you can come out of the problem. Once you learn the practices always continue, remain become with a habit. you. You can come out of the problem. And let me say, once you do Kumbhak for a certain period of time, the tolerance of the body will increase a lot. So you can push all the problems much further, Okay. which is bound to come. You can push them much further. And if you continue Kumbhak, you will keep on climbing the ladder of health. Not only health, if you keep on doing Kumbhak, then you will also see there are many other benefits apart from health that Kumbhak can give. Hanji, Like at the moment, I Namaste, have Swamiji. sciatica and all that. Just Huh? though it is healing, I have sciatica at the moment also, but it is healing. sciatica is just But a matter of alignment. If you do, sciatica will go. It's very easy. And see, the program is online. The program is online. We also give you the videos and the instructions, PDFs. So it doesn't matter where you live. There are people who might be traveling in between, but they can always catch up with the program. एक एक करके Swamiji, बोलिए. I have a question. हाँ बोलिए. नमस्ते स्वामी जी, Can- आपने एक अभी एक मिनट, शिवान जी बोलिए आप. okay, thank you, Guruji. Can Thank you we- so much. Can we do Thank you. Sudarshan Kriya while doing this process? Basically, when you are initiated into some kind of a spiritual practice, it doesn't hamper with the spiritual practice. Rather, it enhances the benefit of your spiritual practice. So we never tell you to stop any kind of spiritual practice, but we tell you when to do what. We just tell you how to position it. हाँ जी, प्रियंका जी क्या बोल रहे थे आप? नमस्ते स्वामी जी, मैं नमस्ते जी। फिजिकली तो हेल्प चाहिए, लेकिन मुझे स्पिरिचुअली भी हेल्प चाहिए। तो अभी आप बोल रहे थे कि स्पिरिचुअली हेल्प के लिए नहीं है, तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू मोर क्लैरिफिकेशन ऑन इट, बिकॉज मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअल के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। देखिए, हम स्पिरिचुअल का अभी नहीं बोलेंगे आपको. क्यों नहीं बोल रहे हम आपको? क्योंकि ये गलत धारणा है कि फिजिकल और स्पिरिचुअल अलग अलग है. एक बात मैं आपको गारंटी के साथ आप लिख लीजिए, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं है तो स्पिरिचुअली कोई चांस नहीं है आपका. केवल इमेजिनेशन है, ठीक है ना? वो आप इमेजिन करके खुश हो सकते हैं. लेकिन अगर आप फिजिकली थोड़ा एम्पावर करेंगे तो ही स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटी भी बनेगी. वरना स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कभी. जी, दो ही दिन हुआ है मुझे आपका वीडियो देखकर यूट्यूब से करते हुए कुंभक, जब 5 मैजिकल प्रैक्टिसेस, एंड मैं जो भी स्पिरिचुअल में जिस लेवल पे हूँ वो और अच्छा स्ट्रांग हो गया है. सो आई एम लुकिंग कि आपका एक वीडियो में मैंने देखा था, आपने कहा था कि बॉडी का वाइब्रेशन चेंज करने के लिए जो कि मुझे करनी है, तो आप मेरे को सिखा पाएंगे प्लीज? हाँ, तो वो ये प्रोग्राम उसी के लिए तो है. ठीक है, बस ये प्रोग्राम और कस्टमाइज करते हैं हम, वो तो इसी के लिए है. देखिए, वो आपको मैं इसीलिए मैंने बताया, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को हम रोकते नहीं, मगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का असली बेनिफिट लेना है तो भी आपको कुंभ करना पड़ेगा, वरना तो वो एक ख्वाब ही रह जाएगा. जी, वो एक्सपीरियंस मैं 2 दिन में ही कर चुकी हूँ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और प्लीज हेल्प करिएगा. थैंक यू. हाँ, वो इसी के लिए है, ये प्रोग्राम इसी के लिए बनाया. हाँ जी, कौन और कोई है? यस. हाँ, वर्षा जी बोलिए. हाँ जी, स्वामी जी, मेरे को ना अर्थराइटिस तो है ही, सोरियाटिक अर्थराइटिस, साथ में मुझे सोराइसिस भी है, तो विल इट हेल्प इन सोराइसिस आल्सो? सोराइसिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस का जो कोर है, जो रीजन है, वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के साथ में जुड़ा होता है. ठीक है ना? और इम्यूनिटी में भी 2 पार्ट मैंने आपको बताया. एक तो इम्यून रिस्पांस खराब होने के कारण, दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं ना कि बॉडी का टॉलरेंस कम हो जाता है, जिसको हम आजकल के टर्म्स में एलर्जिक कंडीशन कहते हैं. ठीक है ना? 2 चीज आ गई इसके अंदर. एक तो इम्यून रिस्पांस खराब होने, बिगड़ने के कारण, जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं या सिंड्रोम बोलते हैं, और दूसरा पार्ट यह है कि बॉडी का टॉलरेंस कम हो जाने के कारण एक एलर्जिक कंडीशन भी है ये. तो ये दोनों ही चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं पहले बता चुका हूं
कि टॉलरेंस आप बढ़ाएंगे और दूसरा पार्ट जो है इम्यून बैलेंस या इम्यून रिस्पांस को स्ट्रेंथन करेंगे, मेटाबॉलिक रिस्पांस को एनहांस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे। देखिए एक बात और बता रहा हूं मैं, आपके शरीर पे प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली सिम्टम है। एक और प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कॉस्मेटिक, यानी कि स्किन का कलर चेंज हो गया या स्किन का टेक्सचर चेंज हो गया। एक तो कॉस्मेटिक चेंज होता है, मगर कॉस्मेटिक चेंज जो होता है वो सिम्टम के कारण होता। अगर आपका सिम्टम ठीक हो गया तो एक बात आपको बताऊं कि आप कॉस्मेटिक चेंज के लिए परेशान नहीं हो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो स्किन में टेक्सचरल चेंज है या कॉस्मेटिक चेंज है ना, अगर वो परेशान नहीं करे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं 100%, है ना। स्किन का टेक्सचर वेक्चर करने में या तो वो काफी टाइम लेगा, और एक बात बताऊं, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, है ना। हम सिम्टम खत्म कर देंगे। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई अगर पूछना चाहे तो। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते सर। स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इसमें समय किस वक्त देना होगा, सुबह के वक्त की शाम? Can you please unmute yourself? Yes. देखिए ये समय कब देना होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है वो तो हम आपको प्रोग्राम में बता देंगे। आप सुबह या शाम दोनों टाइम पे चूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर भी है कि आपका जब आपको टाइम हो तब आप ये कर सकते हैं। हाँ जी, कोई और रेलेवेंट क्वेश्चन हो, कोई और पूछना चाह रहे थे? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं सर मैं 56 ईयर का हूँ और मुझे स्पॉन्डिलोसिस का 4-5 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने एमआरआई किया, एमआरआई करने के बाद फाइंड आउट हुआ कि L5 और H6 में थोड़ा सा नस वो दब गया है। मैं फिजियोथेरेपी और ट्रैक्शन वगैरह एवरीथिंग आई हैड डन, मुझे काफी सारा फर्क आया है। बट आपका जो मैंने अभी लेक्चर सुना, मतलब वो काफी सारा मुझे इंस्पायरेबल हूँ, तो ये कवर हो सकता है क्या? देखिए आप ट्रैक्शन तो कहीं फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके करवाओगे, लेकिन वही चीज अलाइनमेंट का अगर आप अपने घर पे कर सकते हैं तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया चीज होगी। ओके, तो हम आपको जो अलाइनमेंट सिखाएंगे ओके सर, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आपको पता चला हर रोज अलाइनमेंट कर रहे होगे, हर हफ्ते अलाइनमेंट कर रहे होगे, तो आपको तो आपकी बॉडी जो है और एम्पावर होती जाएगी ना। हेलो सर। स्वामी जी। स्वामी जी हाँ जी। नमस्ते। स्वामी जी। Vishwanath Gupta sir, please ask your question. हाँ स्वामी जी, मेरी वाइफ को 45 ईयर से अनम्यूट Vishwanath sir, please unmute yourself. हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, मेरी वाइफ को लिकोडर्मा है लास्ट 45 ईयर से, फेस में भी है, उंगली में भी है, पैर में भी है। तो उसके लिए क्या इससे आराम मिलेगा? देखो ल्यूकोडर्मा से जो प्रॉब्लम आती है, मैंने पहले भी बता दिया कि स्किन में दो चीज होती है। एक होती है ल्यूकोडर्मा से जो उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके शरीर में तकलीफ आ रही है, और दूसरा वो स्किन का टेक्सचर बदल गया या उसका रंगत बदल गई। तो रंगत पे ना जाए, प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। जी ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो मैं अभी इसके पहले यही बता रहा था कि कॉस्मेटिक चेंज की तरफ में अगर आप ध्यान ना दें, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम अंडरलाइन कॉज खत्म हो जाए। अच्छा, मतलब कुंभक करने से इसमें फायदा मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल 100%। हेलो, ठीक है सर, यही पूछना था आपसे। ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं विजय बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर मेरी वाइफ, Please unmute yourself, sir. हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। वाइफ का राइट फॉन्डल मिनिस्कस टीयर हुआ है, तो रिकवर हो सकता है क्या आप? हाँ, ये मैंने बात कर दी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोबारा से, पहला क्वेश्चन ही था मेनिस्कस टीयर का। दूसरा क्वेश्चन हाँ, दूसरा क्वेश्चन। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी
स्टोन हाँ का जी ना बोलिए। से स्वामी ये जी, Please unmute yourselves. There is a lot of disturbance. So kindly, all the participants, please, if you can maintain some silence, and the participant who's asking, so they can ask. हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मुझे ना किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है 25 साल से, लेकिन मेरा स्टोन निकल जाता है, बट उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं? स्टोन बनता क्यों है? अगर वो बनने का रीजन आप सॉल्व कर दें तो स्टोन स्टॉप हो जाएगा। सर तो लेकिन वो बनता कैसे क्यों है स्टोन? हाँ? बनता क्यों है स्टोन आपके शरीर में, मालूम है आपको? कैसे करेंगे वही मुझे हाँ, बॉडी के अंदर जब भी पानी होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी तो स्टोन बनेगा, है ना। पानी आप निकाल दीजिए किसी चीज से तो वो पथरीला हो जाता है ना, हार्ड हो जाता है। तो पानी अगर कम बन रहा है, होल्ड करने की क्षमता बॉडी की अगर हम बढ़ा देंगे तो स्टोन बनने का जो रीजन है उसको हम हैंडल कर लेते हैं, जो कि कुंभक से हो जाता है बड़ी आसानी से। बोथ गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन दोनों के लिए है। और दूसरा कोई एक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग, जब मैंने कहा कि लास्ट क्वेश्चन तो सब पूछने लग गए। एक क्वेश्चन और लूंगा, उसके बाद नहीं ले पाऊंगा मैं। आप क्वेश्चन ना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन होता है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। हाँ, मेरे पिताजी को सीओपीडी का प्रॉब्लम है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके फेफड़े में भी प्रॉब्लम है, और वो एक पैर से चल नहीं पा रहे। अभी 8 दिन से उनका जो सुबह उठते ही जो घुटने में कुछ दर्द हो उनका रहा है। वेट ज्यादा है कम है? कुछ नहीं, 60 वेट है उनका, और एज उनकी 65 एज है, और वेट भी 60 है, ज्यादा वेट भी नहीं है। तो जो एमआरआई किया ना घुटने का, तो अभी सभी, हाँ मैं वो ठीक है, वो हम देख लेंगे। एक काम कीजिए, अभी सभी लोगों के लिए बता रहा हूं कि आप ना कंडीशन के साथ में ना मैसेज डालिए, सारी कंडीशन बता दीजिए, मैसेज डालिए, ताकि हम आपको, क्योंकि एक ही प्रोग्राम नहीं है हमारे पास में, कई लोग हैं जिनकी, हाँ कई लोग हैं, वो ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाए। हमारे पास में ऐसे केसेस हैं जो हम अस्थमा के लोग 16 20 गोलियां ले रहे थे, वो छोड़ देते हैं 3 महीने के अंदर, सब कुछ ठीक हो जाते हैं। इनहेलर आराम से ड्रॉप हो जाता है, 1-8 महीने में इनहेलर ड्रॉप हो जाता है। लेकिन कौन से प्रोग्राम में आप, हाँ क्लास महीने की है तो चलेगा क्या वो उनको ही करना पड़ेगा क्लास? नहीं, पहले वही मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। पहली बात तो कंडीशन के साथ में ना आप हमें मैसेज डाल दो कि ये कंडीशन है। अब जैसे 4-5 प्रॉब्लम है वो डाल दो, एज के साथ में, वेट के साथ में हमारे को कंडीशन डाल दो। अगर वो इंसान नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो मेथड्स हैं वो ऐसे हैं कि एक बेड पे बैठा हुआ बंदा भी कर सकता है। तो हम गाइड करते हैं कि कौन, अगर वो नहीं समझ सकते, सपोज कीजिए वो लैंग्वेज नहीं समझ सकते, तो उसमें क्या होगा, एक असिस्ट करना होगा उनको, उनका परिवार का एक सदस्य सीख के वो करवा दे उनको, है ना, ये भी किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें हम आपके साथ में पर्सनली भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप हमें कंडीशन के साथ में, फोन नंबर के साथ में आप अगर डाल दो, मैसेज डाल दो, यहाँ पे जो चैट बॉक्स है वहां पे डाल दीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप जिसके पार्ट है आप उसमें डाल दीजिए, तो कोई आपको कॉल करके आपसे और अच्छे से समझ के फिर उसको मेरे साथ में डिस्कस करके सही प्रोग्राम की तरफ में आपको, या जिनके बारे में भी गाइड कर रहे हैं उनको भेज देंगे, और आपको भी बता देंगे कि कैसे किया जा सकता है, इसका मतलब क्या जुगाड़ है ना, कैसे उनको फायदा होगा। तो वो सब आपके साथ में डिस्कस करके हम आपको बताएंगे। कोई ना कोई आपके टच में, आपको फोन करके बोलेंगे, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर है। तो जो क्वेश्चन है वो सारा आप मैसेज कर दो, चाहे यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, तो आपके साथ में सभी डिस्कस करेंगे। अभी हमको जाना पड़ेगा, अभी हमको उसको रोकना पड़ेगा इस वेबिनार को, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। आपका वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका जीवन बहुत हेल्दी और सुखमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। Thank you so much, Swamiji, and to all the participants. अभी जिनके questions रह गए हैं, we are really apologetic, and because we had shortage of time, so we had to stop the webinar.
आप लोग काइंडली वेबिनार ग्रुप में अपने अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए. We will answer it shortly. Thank you so much. Namaste. Good night. Signing off. Rachna Botra. Good night.